two, two table for this JK flip flop. Okay. So just I need a space, so I'm replotting this one. Okay, so I have, okay, you have J, K, Qn plus 1, and then you have a clock. Okay, so first your clock is going like this. Okay, then you have to see the variables. Okay, if you want to check, you can check also, but it will always give correct values. Okay, so if you want to check, you can check. This is your NAND gate. Okay, is connected here, and output of this one connected here. You have one NAND gate here, one NAND gate here. Sorry, one NAND gate here, and you have three. One is J, one is this one, one is this one is this one, and then you have K. Okay, and then you have a clock. Your clock. Okay, this is your Q, this is your Q bar. Now let us start. Clock is 1. Okay, initially clock is 1, and this is your 0, 0, 0, 0. This can be 0, this can be 1. Okay, so we'll show you the output. So 1, 0, 0, 0 is a no change condition. So this will be 0, this will be 1. Okay, if you want, you can put the values and you can check. Okay, so I'm taking 0, 0. So your J is 0. Okay, and your K is 0, and clock is on. So clock is 1, clock is 1. Okay, initially I'm taking this as a 0. Initially I'm taking this as a 1. So this 0 going here. So obviously this 0 also comes here. Okay, and this 1 going here. So this 1 also comes here. Okay, now you can check. Initially this is 0, 0. Okay, now you have a 0, 1, 1. So automatically this becomes 0, this become 1. Here also more than 2 inputs are 0, 1, this become 1, automatically become 1. Okay, now this 1, 1 goes here, 1, 1, this become 1. So this again comes out like a 0. Okay, now this is your 1, and this is 0, 0 going here, 1, 0, 0, and 1's come out here. This 1 is going here. Okay, again the situation is same. So when you put 0, you got 0. Okay, now similarly you can check if you put 1. Okay, if you put 1 here, you get 1 again here. Okay, so now I'm not doing anything. It's easy, it's not difficult. Okay, you can do it yourself. So whenever you do variables, okay, you get same. You have to do until it gets stabilized. Okay, so until it gets stabilized, you need to repeat these things. Sir, scheme. Okay. Okay. So now if you do again this one, okay, you put 0, 1, 0, 1, this is 0, 1, this is 0, 1. This will be your reset states. You get 0, 0. Clock is on. This is 1, 0, 1, 0. This is 0, 1. You get set the state 1, 1. Now here one thing is interesting. When you put 1, 1, 1, 1, okay, then you get toggle state. If 0 it become 1, if it is 1 it becomes 0. Okay, and if you put 0, clock is 0, then this input become inactive. If you're 0, you get 0. If you're 1, you get 1.
that is a no change condition. Okay, so basically now these are the states. Okay, initially this is your no change condition. Okay, this is your reset condition, this is your set condition, and this is called your toggle condition. T4 toggle उल्टा हो जाएगा. Toggle state मतलब अगर 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा when variables are 1 1. Okay, and this is the same. If you put 0, clock is then it is a no change condition. Okay, so in this flip flop you don't have an inbuilt state, extra you have toggle state also. Okay, सर ये पॉजिटिव ट्रिगर्ड ही है ना, मतलब positive trigger clock है. Okay, so this is positive triggered clock. Okay, and this is like same. What would we wait for 1 minute or okay. Okay, so this is a positive triggered clock. Now you can check putting the values. Okay, जब तक ये set नहीं हो रहा है, you can check the putting truth table is okay or not. Okay, you can check it. So just check the entries. If you're finding take 5 minutes and take your entries whether this is wrong or not. Okay, so now we start doing some problems. So this question I was asking, this came in exam. You have a JK flip flop. Okay, clock you can put here or here, whatever you want. Okay, I'm putting clock here. Positive trigger clock is there. Okay, and you have Q and you have a Q bar. Okay, this Q bar is connected to here. Q bar is connected to here. Okay, and here you have 1. Always 1 is constant and this clock. Okay, and this says the initial value of Q is 0. In question says initial Q is 0, that is Q bar is 1 initially. Okay, then asking after continuously 5 clocks are applied on this flip flop. Okay, so after 5 clock, okay, 5 clocks applied, what is the sequence of output Q? What is the sequence of output Q? Okay, so you have applied, okay, you have JK flip flop and this they connected like this. Now you're giving clock and each clock there will be transition. Okay, so he says what is the sequence of output? Initially your Q is 0. Okay, so they have given you options. सर ईच क्लॉक ट्रांजिशन मतलब बता रहा हूँ अभी. ओके, ट्रांजिशन क्या होता है? क्लॉक के साथ ही होता है ना. क्लॉक आएगी, क्लॉक होगी तभी तो स्टार्ट होगा. ओके, अब यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव भूल जाओ. अब नेगेटिव ट्रिगरिंग है, पॉजिटिव ट्रिगरिंग मतलब नहीं है, बस क्लॉक आएगी तब ट्रांजिशन होगा हमको. ओके, हमको ये याद रखना है. सो नाउ अभी क्वेश्चन में दे रखा है आपको कि 5 क्लॉक, इसको 5 क्लॉक देनी है आपको और 5 क्लॉक के बाद मुझे सीक्वेंस बताना है कि सीक्वेंस क्या है. तो ऑप्शन दे रखे हैं आपको क्वेश्चन के अंदर, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ. सो ऑप्शन आर गिवन. ओके, ऑप्शन ए is 0 1 0 0 0 0 1 2 3 4 5. Okay, then you have a B 0 1 0 1 0 0 1 1 2 3 4 5, and option C is your 0 0 1 1 0 0, and option D is your 0 1 0 1 0 1. Okay, so out of this 5 option, what is the output sequence? Okay, so find the output sequence. Find the output sequence. Okay, initially this is 0, initially this is 1, so यहाँ पे 1 लगा हुआ है. Okay, initially 1 लगा हुआ है. Okay, तो अब क्लॉक आ रही है. So जब क्लॉक आएगी, first pulse is coming. So initially, see, this all are clear. Clear means initially you are Q 0. So I'm writing the sequence of output. Initially Q is 0.
ओके, नाउ माय पल्स इज कमिंग। अब पल्स क्या दिखेगी, इनपुट क्या क्या है, पल्स के लिए इनपुट क्या क्या है बताओ, व्हाट आर द इनपुट्स? 1 1 वेरी गुड, 1 1। सो 1 1 इज अ टॉगल स्टेट, तो अगर 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 तो 0 हो जाएगा। ओके, सो दिस बिकम वंस एंड दिस बिकम 0। अब ये 0 वापस यहाँ पे आएगा, ये तो फिक्स है, ये 0 यहाँ पे आ गया। अब अब सेकंड क्लॉक आ रही है, सेकंड क्लॉक, अब वो इनपुट क्या दिखेगी, 0 0 1। 0 1 is what, reset state. Okay, reset state. so this will be reset, so this becomes 0 and this become 1. Okay, and this 1 will come here. Okay, now third pulse is coming, third pulse will also, so first you have to write the what is the output now. Okay, so initially it was 0, it become 1 with toggle state. Okay, and after second what was the state, 0 Reset. 0. Now third is coming, third we see 1 1, so again it will toggle. Okay, third is coming, one receiving 1, so this become 1, this becomes 0, and this coming 0 here. Now fourth clock will come. Okay, fourth clock is 0 1, again it will reset, so this becomes 0, this becomes 0, this become 1. Okay, now this 1 go again here. Okay, now fifth clock is coming, fifth clock will see again 1 1, so this will again toggle, this become 1, this becomes 0. Okay, so this become 1, so 0 1 0 1 0 1. Okay, so 1 2 3 4 5, so D option is correct. Okay, are you getting this one, कैसे कर रहा हूं मैं? So is this op-amp act with the clock? Okay, so clock के साथ ही काम करता है. Okay, let me give one more question. So video stopped है. हाँ स्टॉप देख रहा हूँ, तो बस इस क्वेश्चन के बाद एंड करते हैं हम लोग, ठीक है, जब आने का तो डिस्टर्बेंस क्यों करेगा. ओके, जस्ट गिव मी वन मिनट, आई विल गिव यू वन मोर क्वेश्चन. तो ये क्वेश्चन किसी को डाउट है तो पूछो. ओके, अदरवाइज वेरी सिंपल व्हाट आई एम डूइंग हियर. The next is you have been given a JK flip-flop. Okay, and this is the output Q bar, and here is a clock. Okay, and the J, here you given J1, J2. Okay, here you have one more AND gate, K2, K1 or K1, K2. Okay, and this is coming here. Okay, now this says they are given the value of J1, J2, J1, J2 and K1, K2. Okay, the sequence they have given. So J1 sequence is your 1 0 1 1 0 1 1 0. Okay, J2 sequence is 1 1 0 1 1 0 0 1. K1 sequence is 1 0 0 1 0 1 1 0. The K2 sequence is 1 1 0 1 1 0 1 1. Okay, so इस sequence के अंदर we are giving input J1 J2. Okay, we are asking what is the sequence of Q, what is the sequence of output Q. Okay, output Q का sequence बताना है आपको. So transition at every clock. क्लॉक हाँ क्लॉक ट्रांजिशन, वो तो क्लॉक ट्रांजिशन तो क्लॉक पे होगा, तो अज्यूम है. ओके, नाउ अभी क्या है कि इनपुट ऐसे आ रहे हैं, राइट से आ रहे हैं. पहला इनपुट ये
पहले पहले ये आ रहा है J1 0 J1 0 J2 J1 0 J2 1 0 1। ओके, तो अब क्या आएगा आउटपुट? ओके, तो ट्रांजिशन क्लॉक के साथ ही आ रहा है। यू आर ओनली वेरिंग द इनपुट एंड देन यू अप्लाइंग क्लॉक। सो क्लॉक के साथ ट्रांजिशन हो रहा है, आपको क्यू का सीक्वेंस बताना है। Okay. So the entries are from right. Okay, so these entries are from right. Entries are from right. Okay, जैसे एक करके मैं दिखा देता हूँ। Okay, J1 0 J2 1. So J1 I am giving 0 1. This will end gate is 0. Okay, so this is 0 1. So again this is 0. So initially the you have 0 0. Okay, so 0 0 is a no change condition. So initial condition say Q is 0. I am giving initial condition 0. So initially it is 0. Q is 0. Initially Q is 0. Okay, so once 0 0 come clock. Okay, 0 0 is no change condition, so 0 will be 0. Okay, now apply second entry, third entry, and you tell me the final answer. Okay, tell me the final answer. सर एंट्री सेकंड तक। सेकंड एंट्री डालो। आप करते जाओ। पहले मैंने फर्स्ट एंट्री डाली, दिस इज फर्स्ट एंट्री। अब सेकंड एंट्री डालो। सेकंड एंट्री इज 1 0, दिस इज 1 1। सारी एंट्री डालते जाओ। टोटल एंट्री कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंट्री है टोटल। तो पहली एंट्री मैंने कर दी, बाकी की एंट्री करो। सो इनिशियली 0 था, उस एंट्री को मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ। ओके ओके, चलो इनिशियल का काउंट कर लेता हूँ। चलो इनिशियली 0 0 है। चलो ठीक है। नाउ यू हैव गिवन बट 0 0 0 0 1 0 0 1 0। बताओ कितना आ रहा है? It's not 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। okay, 8 है। So I'm writing the answer, you tell me the, जीरो। so I'm writing the answer, this should be the answer 1 1 1 5 0। 2 3 4 5 ये आ रहा है क्या आंसर? सीक्वेंस सीक्वेंस आपको यहीं से देखना है। ये सीक्वेंस देखना है आपको, ये सीक्वेंस। पहला ये, पहले में 0 आया, सेकंड में 0, थर्ड में डिजिट 0। ज्यादा है इसमें, हम्म, एक डिजिट ज्यादा है इसमें। अच्छा, एक तो ये आ रहा आंसर। पहली स्टेट क्या है? पहली 0 1 0 1 0 0 0 0 इज 0। ओके, जो इनिशियली 0 था वो 0 ही आया। ठीक है, अब वो इनिशियली का पता नहीं इसमें है कि नहीं आंसर, मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, नाउ नाउ यू सेकंड इज योर 1 0 0 1 1 1। अगेन 0 1 ही है तो 0 ही रहेगा। फिर थर्ड क्या है आपका? थर्ड आपका ये 1 1 1। ओके, थर्ड है 1 1। यहाँ पे भी थर्ड क्या है? 1 1 है। सो सो 1 1 1। सो थर्ड में क्या 1 1 हो गया? ओके, सो इट वाज 0 टॉगल स्टेट। बस कुछ मिस्टेक आ रहा है। ओके, जस्ट लेट मी चेक द आंसर अगेन। सो लेट अस डू टुगेदर सीक्वेंस ऑफ आउटपुट। ओके, तो सीक्वेंस ऑफ आउटपुट से मेरा पहले 0 आया, इनिशियली 0। ओके, नाउ आई अप्लाइड हियर 0 1 and 0 1 0 1 0 0 0 0 0 came. Okay, so I get 0 here, let it 0. Okay, now for second case I am giving you 1 0 1 0 0 and 1 1 0, so 0 1. This means 0 0 1 0 1 is again this one, so I should get 0 also. Okay,
So my GQ is 0. Now third one 1 0 0, third one 1 1 0. Okay, so 0 0 again 0. Okay, let me put fourth 0 1 0, and this is 0 0 1 0. Okay, so again 0. Now fifth one 1 1 2 3 4 5 1 1 1. Okay, and 1 and 1 1. Okay, fifth is 1 1. So fifth is 1 1. Okay, so this is the toggle condition, so now you should get 1. ओके, अब सीक्वेंस वो कैसे लिखा हुआ मैं देखूंगा, राइट में लिखना है उल्टा लिखना है, कैसे लिखना है. ओके, दिस इज 1. ओके, नाउ उसके बाद में सर सिक्स पे 6. हाँ बोलिए. सर इसमें हमने जब 0 0 देखना है तो ऐसे जो नो चेंज स्टेट थी हमने वो नहीं देखना कि स्टेट चेंज ही नहीं हुई तो उसके बाद मतलब सेम लिख लेनी है. हाँ तो वही और तो, अगर तो उसी के अकॉर्डिंग आउटपुट लिख रहे हैं भाई. 0 0 नोचिंग 1 1 कंडीशन. पे सेट, हाँ सर बीच में आ रही है 1 1 सेट कंडीशन या आ रही है कहाँ वो. कहाँ आ रही है, मैं लिख तो रहा हूँ पूरा. ओके, फिर मैं शुरू से लिख तो रहा हूँ मैं. जैसे पहला में क्या है 0 1. ओके, 0 1 0 0 1 0. सेकंड में क्या है 1 0 0, दिस इज 1 0 0. सेकंड में 0 0 कंडीशन, नो कंडीशन नहीं है. ओके, थर्ड में क्या है 1, थर्ड में 1 1 0 0 1 1 1, तो 0 1 है तो सेट कंडीशन नहीं है, तो ओके 0 सर, आएगा, 0 आएगा. मैंने गलत ले लिया डिजिट, ओके, कोई बात. सर आप लेफ्ट से लिख रहे हो या राइट से? अब वो मैं देख रहा हूँ, मैं लेफ्ट से लिख रहा हूँ. ओके, एक्चुअली लिखना राइट से है. ओके, लिखना राइट से है, मैं लेफ्ट से लिख रहा हूँ. ओके, सो मैं सो कितने जीरो आ गए 1 2 3 4 5. आफ्टर हाउ मेनी क्लॉक आई अप्लाइड 5 और 6th. ओके, सो नाउ यू आर हियर फिफ्थ. ओके, नाउ 1 फिफ्थ में क्या है 1 1 2 3 4 5. फिफ्थ इज 1 1. ओके, 1 2 3 4 5 1 2 3 4. फिफ्थ इज 1. नाउ सिक्स्थ. Now sixth is what 1 2 3 4 5 6. 6 is 1 1 2 3 4 5 6. 0 becomes 0, and here 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0. So sixth is 0 0. Okay, so this is 0. So what will happen now? Sixth is 0 0. So 0 0 no change condition, so again you get 1. Again you get 1. Okay, and again you get 1. So this is the answer. This was I'm saying I'm writing opposite now. 0 1 1 1 0 0 0 0 3 4 5. Okay, this should be answer if you write opposite. It's in a sequence. हाँ सेकंड जब आपने लिया तो J1 इज 1, हाँ, J2 इज 0 जीरो हो गया. 0 और K1 इज 1 एंड हाँ K2 तो इज 1. हाँ 0 तो 1 में तो जी, रीसेट स्टेट है जैसे. हाँ तो जीरो का जीरो रहेगा. ओके, रीसेट पे सर सेम. हाँ से रेस सेम की तरह, अगर 1 होता तो उसको जीरो कर देते हैं, पर अब जीरो ही है तो जीरो ही रहेगा. ओके सर. Okay, so like this you have to apply, and this is answer. Okay, you can check it again. This answers आसान है, आ जाएगा. सर हमारे डिजिट तो 8 है इसमें, तो अभी एक आंसर में. हाँ तो एक इनिशियली जीरो ले लो ना, लास्ट वाला, शुरू वाला, सबसे सबसे पहले वाला जो इनिशियली जीरो था, उसको भी रख लो, क्या दिक्कत है. आंसर में इसने क्लियर नहीं किया है, तो इनिशियल स्टेट वाज जीरो ना, तो उसको भी रख दो यहाँ पर. इनिशियल इसको जीरो रख दो, तो फिर शायद ये वाला होगा 1 2 3 4 5 के साथ, 5 के साथ ही चेंज हुआ था ना. हमारा आंसर 5 में चेंज हुआ था, 5 हाँ के बाद ही जी चेंज हाँ हुआ जी. था. ठीक है, देन यू कैन डू इट लाइक दिस. तो आपको देखना पड़ेगा, एग्जाम में भी कभी कभी कंफ्यूजन देता है. एक जैसे पिछले क्वेश्चन में जीरो सब में दे रखा था, तो हमने पहचान लिया कि इनिशियली जीरो सब कर लिया है. अब हाँ इसमें जी सर. ओके, सो दिस इज योर आंसर. तो इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में. ओके, so let me give you one more question. Okay, so I'm giving the clock. 5 clocks I'm giving. 1 2 3 4
and 5 clocks. So clock 1, 2, 3, 4, 5 clock, and there you have input J, input K, and you have to find out finally the output Q. Okay, so this is your between, see this is negative triggered. Okay, so there's a negative triggered clock. So you have this A, transition will happen A, B, C, D, E. Okay, now initially J is 0, is going up to here down. तो इनपुट तो दे रखा होगा, क्वेश्चन में दे रखा होगा, वो मैं प्लॉट कर रहा हूँ पहले. ओके, this one, ठीक है, and then it's going up, and B is getting up to B, and then going down to C. Okay, and this continuously down. K is also down up to here, up to A, and just before B is rising, and then it is getting down again up to C. Okay, after C, so you have to make sure all 1 should not come. Okay, so this is here, and this is 0 1 again here, and this is going D, but here C to here C, and then it's going down, and just before here is rising, and this here. Okay, now tell me what is the output. इस तरह क्वेश्चन एक्चुअली पावर पॉइंट पे करानी चाहिए. ओके, सो ड्राइंग टेक्स टाइम्स. सो आप तो रैंडमली कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो. ओके, क्योंकि इसमें तो इनवैलिड स्टेट होती नहीं है. इन जेके फ्लिप फ्लॉप वी डोंट हैव इनवैलिड स्टेट. अगर एसआर फ्लिप फ्लॉप है तो हमको ध्यान रखना पड़ता है कि ऑल 1 नहीं होने चाहिए. सो नाउ हियर तो क्या आप क्लॉक बना दो, कुछ भी इनपुट बना दो. ओके, बिकॉज दिस देयर वी डोंट हैव इनवैलिड स्टेट. तो बस हमको चेक करना है कि कैसा आउटपुट आएगा. ठीक है, बताओ कैसे आउटपुट आएगा. इनिशियली ट्रांजिशन विल टेक प्लेस ओनली अप टू नेगेटिव एज ट्रिगरिंग. ट्रांजिशन यहीं पे होगा, खाली जो भी ट्रांजिशन होगा वो यहीं पे होगा. Okay, now transition will take place here. Okay, this point it is a 1 and it is 0, so it is what, set the state. So initially let us say I'm taking 0. Okay, I'm taking 0. At this point it become 1, initially Q0. Okay, so this become 1. Now next transition will take place here. So at this position this is 0 1. 0 1 is set reset condition. Okay, the next transition will become here is 1 1 1. Okay, so 1 1 पे क्या होता है, टॉगल होता है 1 1 पे. so this is now negative triggering, this is 1 1 1 पे टॉगल होगा, तो 0 है तो 1 हो जाएगा. Okay, again it will go up to 4. 4 पे क्या है, you have 0 1. 0 1 is the reset state, so down. Okay, again it will continue like this. It will come fifth पे क्या है, again you have a 0 0 1. 0 1 is what, reset condition, so it will go like this. Okay, so you have 1. Okay, now if you have doubt please ask. ये समझ में आ रहा है कि कैसे हो रहा है? सर एक बार एक्सप्लेन कर दो. Okay, अभी क्या है, this taking pair with negative triggering. Okay, so that means transition will take place only in this edges. Okay, अब ये नेगेटिव एज आ गया. अब ये जो नेगेटिव एज है ये इनपुट क्या देखेगा, ये इनपुट देखेगा j इक्वल टू 1. हाई मीन्स 1, लो मीन्स 0. इट विल सी इनपुट 1 एंड k 0. तो 1 0 क्या होता है, 1 0 में क्या होता है बताओ. सर 1 1 0 1 होता है, तो ये 0 तो 1 हो जाएगा. तो ये इनिशियली मैं 0 मान रहा हूँ, तो क्या हो गया, अब 1 हो जाएगा. 1 एट दिस एज पे द इनपुट्स आर 1 0. Okay, so 1 0 is a set state. So if anything is 0, if it is 0 it become 1, if it's 1 it will remain 1. Okay, so now you have here 0 is become 1. Okay, now it will not it will become remain same until next transition. Next transition is saying what, 0 1.
0 1 is what? Reset state. Okay, so reset state means हाँ जी 0 will be 0, 1 becomes 0, so 1 becomes 0, so it could be 0. A third clock sees what is the input. Okay, 1 1 1 1 is a toggle. Toggle means 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 तो 0 आ गया, तो ये 0 है तो ये उल्टा हो गया, 1 हो गया. This way हाँ it जी goes like. Clear? yes sir Okay. Yes. Okay, so this was your JK flip flop. Okay, सर हम इनिशियली Q1 भी ले सकते हैं ना? इनिशियली क्यू 1 भी ले सकते हैं, वो क्वेश्चन में दे रखा होगा. ठीक है, दैट वुड बी गिवन कि इनिशियली जब आप प्लॉट कर रहे हैं इनिशियल आउटपुट क्यू का क्या है, तो अकॉर्डिंगली वी कैन प्लॉट. तो क्यू आएगा तो बस ये हो जाएगा, ये यहाँ से ऐसा हो जाएगा और क्या, फिर 1 0 में हाँ सेट जी ही वो रहेगा, हाई से स्टार्ट हो जाएगा ना हाई से स्टार्ट हो जाएगा और हाई रहेगा, फिर बाकी तो सेम ही है. हाँ जी ठीक है, so this is your JK flip flop. Okay, now put the heading characteristic equations of flip flop. Okay, characteristics equation of flip flop. Okay, characteristic equation क्या है, that we want the expression for qn plus 1. Okay, so like we have SR flip flop. Okay, so SR flip flop, we have qn, we have qn plus 1. Okay, just give me 1 minute. Now we want characteristic equation. Okay, so SR flip flop, you have a 0, so when 0 0 it can be 0 1. Okay, now I want equations, so it is 0 0. If it is 0, this remains 0. Okay, now if it is 0 0 and this is 1, this remains 1. Okay, now if it is 0 1, if it is 0, this remains 0. If it is 0 1, it is 1, it becomes 0. Okay, now if it is 1 0, if it is 0, it becomes 1 1 0. If it is 1, it remains 1. Okay, what is the next? Next is what? Your 1 1 1 1 1 1 is 0 है तो क्या रहेगा, ऐसा फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है अगर 1 1 है तो, और 1 है तो क्या होता है ऐसा फ्लिप फ्लॉप में, without ये इनवैलिड होता है ना, इनवैलिड होता है. ओके, and if you have 1 1, if it is 1, that is also invalid. Okay, so this is basically this your expression for table for your SR flip flop. Okay, now you have to write the function qn plus 1 function. Okay, you have to solve the value, you have to find the output q in terms of SR and qn. Okay, so basically what you need to take, you need to make k map. Okay, so let me check the table is correct. 0 0 1 1 1 0 0 is correct. Okay, so this will become your don't care conditions. Okay, so the table k map will be 3 variable k map. You have s and you take rqn like a b c. Okay, qn. So you have 8 entries, 1 2 3 4. Okay, now put the entries. You are assuming these are your variables. Okay, you have to put the entries here as, so you are plotting for table for qn plus 1. Okay, so this will be your 0 1 and this will be what, 0 0 0 1 1 1 1 0. Okay, so this position is your 0 0 0. Okay, so when this is 0 0 0 0, you have 0. Okay, whenever you have 0 0 1, okay, first position you have 1.
Okay, then you have a 0 1 0 2. So 2 in 2 you have a 0. Okay, and 3 3, what you there? 3 you have a 0. Okay, then you have a 4 you have a 1. 5 you have a 1. Okay, then you have a 6 you have a this one, and then you have a 7 also you like this. Okay, so now qn plus 1 you need to solve. What will the qn plus 1 value? How to make the pairs? Okay, बताओ क्या आएगा आंसर? सर S plus R bar QN. S plus R bar QN. बाकी लोग चेक करो आ रहा है कि बाकी लोगों का? Yes, sir. Okay, so you can make pairs. तो ये तो एक तो वन पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया. तो इस पेयर के लिए क्या है? इस पेयर के लिए you have R bar, okay, QN, R bar QN, and this you have S. This is S, this is S bar. For this pair you have S, and this pair you have this R bar and QN. So S plus R bar QN, answer. This is the characteristic equation for SR flip-flop. Okay, now similarly you have to write the characteristic equation for R flip-flop. Okay, now for write for JK flip-flop, this for SR flip-flop. Okay, now you write for JK flip-flop. JK flip-flop. Now JK flip-flop is like same like this one, but it don't have a your invalid state. Okay, so if this is now your J and this is your K. Okay, all is same, only this it has a toggle state. If 0 comes it becomes 1, if 1 comes it becomes 0, it 1 1. Okay, so everything else things are same. So now you can plot characteristic equation for this one, JK flip-flop. So you have this J. Okay, 1 2 3 4. Okay, then you have a J, you can write here, K Q and you can write here 0 0 0 1 1 1 1 0. Okay, so first term is your K bar QN bar, second is your K bar QN, third is your K QN, and fourth is your K QN bar. Okay, 0 1, that is J bar, and this is your J. Now put the entries. 0 1 is your 1, 2 is your 0, 3 is your 0, 4 is your 1, 5th is 1, 6th is your 1, 7th is 0. Okay, check the table and solve and give me the answer. 0 1 0 0 1 0 0 1 1. ठीक है. Sir, K bar QN plus J K bar plus J QN. Okay. So I'm writing the answer. What is Sultan saying? Sultan is saying K bar QN plus J QN bar. Okay. Other people check please. आ रहा है क्या? How do you make pair? पेयर कैसे बनेंगे? एक पेयर तो ये बन गया आपका, एक पेयर ये बन गया बस. This is your K bar QN, and this is what? This is your J. Okay, J is constant, and here 0 0 0 is QN bar constant. This is your answer.
Okay. Now you can write the characteristic equation for D flip-flop. Okay. You know, D flip-flop we convert from SR flip-flop. Okay. But now entry will become reduced. So D have only one variable. So you don't have to see other variables. Okay. So D flip-flop is very simple. You have a D here. Okay. And then you have what? You have a Qn is there. Present state is there. And then you have a Qn plus 1. Okay. So D values only can be 0. Okay. So if it is 0, it is 0. Okay. This can be 0. This can be 1. Okay. It can be 1. It can be 0. It can be 1. It can be 1. Okay. This is your state. Okay. Now you can write the characteristic equation. So 0, 0 means when I say D is equal to 0, that means S is 0, R is 1. That is a reset parameters. Okay. So 0 will be 0. Okay. 0, 1, this becomes 0. 1, 0, 1, 0 set condition. Okay. 1, if it is 1, it remains 1. So now two table will be what? Only four entries will be there because you have only D and Qn. Okay. So first is 0, 0. 0, 0 is 0. 0, 1 is 0. And you have 1, 1. Okay. So this is 0, 1. This is D. This is D bar. Okay. So obviously you are now Qn plus 1 is equals to D. Okay. So this is characteristic equation for D flip-flop. Now one more flip-flop is also there, which we call T flip-flop. We call it T flip-flop. Okay. What is T flip-flop? Okay. T flip-flop is like a, you can put J equal to K equals to T. Okay. So you have this one, Q bar, say, and then this will come here. This is your latch. Okay. Here you're coming here, this coming here. Okay. Then you have a one is clock. Okay. Now you have a J here, K here. Okay. Now this J and K, I am connecting with another variable, say T. But now it is only one variable T instead of JK. Okay. And this will go again here. And this will go again here. This is your T flip-flop. Okay. Now same है table बनाने में मतलब क्या है कि आपका only you have a 0 0 1 1. Okay, with clock, without clock. So if you want to work table, okay, this will be your clock first. Okay, then you will have variable T, then you will be variable Qn, and then you have Qn plus 1, and then you have a state. Okay, clock on hai. Okay, clock on hai. So when T is equal to 0, T is equal to 0, that is equal to J equal to 0, K equal to 0. Okay,
that is no change condition. So if it is 0, it means 0. If it is 1, it remains 1. Okay, this is no change condition. When t is 1, that is 1, j is also 1, k is also 1. Okay, so this is a toggle condition. So if you put here 0, this become 1. If you put 1 here, this becomes 0. So this is basically your toggle condition. Toggle. Okay, and other option, other is not there. Okay, other only what you can do, you can only put what 0 0 clock 0. Once you make clock 0, this become inactive. So if it's 0, it remains 0. If it's 1, it remains 1. This is no change condition. No change condition. Okay. सर यहाँ क्लॉक के नीचे जो टी है दैट मींस टॉगल Clock. ये वाला नहीं सर जो स्टार्टिंग में क्लॉक के नीचे लिखे हैं टी क्लॉक के नीचे ये हाँ जी टी है. टी इज वेरिएबल. टी दिस इज टी फ्लिप फ्लॉप ना. इसमें लाइक जैसे एसआर से हमने डी बनाया तो हमने एसआर के लिए हमने डी दे दिया, एक ही वेरिएबल दे दिया. अभी हम जेके की जगह एक ही वेरिएबल दे दिया, हमने टी दे दिया खाली. सर Okay. टी की लास्ट वाली 0 0 क्लॉक पे टी की वैल्यूज टी इनएक्टिव हो जाएगा ना. मैंने बोला था ना, जब भी एंड गेट में एक भी इनपुट 0 है तो बाकी का कोई मतलब ही नहीं है, वो 1 ही 1 दे, हमेशा 1 ही देगा. यस Okay, so that means your input is inactive. So this become like 1 1 here. Now depending on here, what is here you get. If it is 0 here, if it is 1 here, this is 1 1. Okay, this become 1 1. So you get 0 here, 0. If it is 1 here, if it is 0 here, then this become 0 0 1 0. This become 1 here. तो यहाँ 1 ही रहेगा. Okay, so सर that will be जो यहाँ टी लिखा हुआ है दैट मींस की वैल्यू 1 है कहाँ पे, यहाँ पे ये स्टार्टिंग में क्लॉक जो क्लॉक टेबल में हाँ हाँ जी क्लॉक 1 है, ये 1 है. ओके क्लॉक ऊपर है, ट्रिगर्ड है मतलब 1 है, डाउन है मतलब नहीं है, मतलब 0 0 है. ये ऑन है, क्लॉक ऑन है, ट्रिगर्ड है. अगर नेगेटिव भी है तो भी ऑन है, पर नेगेटिव पर ये पॉजिटिव ट्रिगरिंग के लिए, नेगेटिव ट्रिगरिंग के लिए ये ऑन है बट 1 है, बट ये है नेगेटिव ट्रिगरिंग. ओके, 0 0 मतलब क्लॉक नहीं है. और लेट मी चेक दिस. ऐसे लिखते हैं, हाँ ऐसे लिखते हैं, ठीक है. नाउ जस्ट मेक द कैरेक्टरिस्टिक टेबल फॉर T flip flop. What are the characteristic equation for T flip flop? So T flip flop के लिए वो क्या करना है, हमारे पास वेरिएबल हमारे पास में यही है खाली, ये हटा दो. ओके, इसको भी हटा दो. दिस इज माय टेबल फॉर T. ओके, और भी कुछ है क्या टी में इसके अलावा? Just give me 1 minute. T का टेबल, just check the table of T. D flip flop. T का बताओ क्या आ रहा है. So T के लिए क्या बनेगा टेबल? You only 4 variables, T and Qn. Okay. So this is 0 1. There's a T bar T, and this is 0 1. That is Qn bar Qn. Okay. So 0 0 पे 0 है, 0 1 पे 1 है आपका, 1 0 पे आपका 1 है, एंड 1 1 पे आपका 0 है. तो पेयर बनेगा ही नहीं. तो बताओ मेरा क्या होगा आंसर? कौन सा, क्या एक्सप्रेशन आएगा बताओ?
सर T XOR QN. एक्सोर की तरह आएगा भी। ये क्या हो Yes. गया आपका, ये आपका टी बार और यहाँ पे क्या है क्यू एन, तो क्यू एन टी, और इस वन के लिए क्या है आपका क्यू एन बार एंड टी, सो टी क्यू एन बार। ओके, सो इट्स लाइक अ टी एक्सोर और क्यू एन एक्सोर टी, क्यू एन एक्सोर टी। सर ये कैसे लिखा, इसमें कोई पेयरिंग नहीं हो रही। तो बस जो पेयरिंग नहीं हो रहा तो फिर क्या करेंगे, जो है वैसा वैसा लिख देंगे। इसके लिए क्या क्या टर्म है, इसके लिए टी T Q N. क्यू एन बार। ओके, और इस टर्म के लिए क्या है टी बार एंड क्यू एन। क्लियर? सो shall we continue more? अभी डिस्टरबेंस तो नहीं आ रहा है? ओके, सो वी कैन डू वन मोर टॉपिक। सो दिस वाज, सो ये एग्जाम में ये प्रॉब्लम पूछता है, दिस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दे आर आस्क्ड। ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर, ऑप्शन दे देगा कौन सा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन किसका है, तो आपको बताना पड़ेगा आपको ये। नाउ आई एम डूइंग conversion between flip flops. Okay, conversion between, मैं एक बताऊंगा बाकी आपको करने हैं। conversion between flip flops. Okay, how can I convert flip flops? For example, if I want to convert SR flip flop, okay, from SR flip flop to JK flip flop, from SR flip flop, अब इसके भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, from SR flip flop to JK flip flop, JK flip flop। ओके, कैसे कन्वर्ट करेंगे SR flip टू JK flip flop? ओके, तो सबसे पहले तो आपके लिए, आपको जिसमें कन्वर्ट करना है उसका आप टेबल लिख दो। सपोज you want JK flip flop, you have QN, you have QN plus 1. JK flip flop can have a 0 0 depending on here. These are the inputs of JK flip flop. You have 1 0 1 0 1 0 1, and then you have 0 0 1 0 1, then you have a 1 0 1 0 0 1, and then you have a 1 1 1 1, then you have a 0 1 here. Okay, so this is your inputs of this one. So this is what here 0 0 0 0. This is a no change condition, no change condition. 0 1 0 0 1 1 1 0. So 1 0 मैं उल्टा करता हूँ, 0 1 0 0 1 0 1 0 1, ओके, एंड 1 0 1 का 1 ही रहेगा, 1 1 में टॉगल हो जाएगा 1 0। ओके, चेक करो सही है कि नहीं है। सही है सर। सो नाउ हमको क्या करना है कि हमको SR फ्लिप फ्लॉप से JK फ्लिप फ्लॉप बनाना है। ओके, दैट मीन्स हमारे पास में इनपुट क्या है, S एंड R है। ओके, बट इसको मुझे JK फ्लिप फ्लॉप बनाना है, दैट मीन्स फ्रॉम SR फ्लिप फ्लॉप टू JK फ्लिप फ्लॉप। ओके, दैट मीन्स मुझे अब आपका जो JK और SR में रिलेशन चाहिए, इनके वेरिएबल्स में रिलेशन चाहिए। ओके, सो आई विल बी ड्राइंग नाउ SR फ्लिप फ्लॉप, but it should work as a like a T flip flop. This should work as like a JK flip flop. Okay, just give me 1 minute. Whatever. So I have SR flip flop. SR flip flop कैसा होता है? This is SR flip flop. SR flip flop. QN bar. Okay, clock will be there. Okay, but I want to bring these inputs like a J and K. That means your S and R should be in the form of J and K. Okay, then only it will become JK flip flop. Okay, variable become JK. So now how can I do this one?
Okay. So for that, you should know what is the excitation table for SR flip-flop. Okay. Now I'm drawing here SR flip-flops. Okay. Put the heading here, excitation table. Excitation table for SR flip-flop. Now, what is your SR flip-flop excitation table? Okay. Just look at that. You have SR, you have QN, and you have QN plus 1. Okay. Now, if you give 0, 0, this becomes 0. If you give 0, 0, 1 remains 0. Oh, 1 remains 1. If you have 0, 1, 0, 1, 0, 1, this becomes 0, 0. And then you have 0, 0, then you have 1 minute. You have this is your 1, 0, 1, 0. You have 0, 1, 1, 1. Okay. So 8 entries, and next is your what? If you have a 1, 1, 1, 1, okay, then 0, 1, this become your XX. Okay. Now you have to see here the state is changing for 0 to 0. Okay, you write here S and you write here R. Okay. Now you have to find the variables, okay, which satisfy these conditions. 0 to 0. Okay, when it comes from 0 to 0, when S is 0, R is 0. Okay, just carefully look. When this situation happens, 0 to 0, when 0 to 0 happens, when S is 0, R is 0. Okay, 0, 0 happens also for when S is 0, R is 1. Clear? What I'm saying, I want to convert from SR flip-flop to JK flip-flop. जिसको flip-flop को बनाना है उसको पहले लिख दो. अब this is your present state, this is your next state. So present state and next state is 0, 0. Okay, so 0, 0 SR flip-flop में कब होता है? 0, 0 when S is 0, R is 0, and same happens also for when S is 0, R is 1. Okay, that means आपका S तो constant है, R आपका indeterminate है. Okay, R vary कर रहा है. R can be 0, R can be 1. Okay, so then what you should write? You should write here S is 0 and my R is indeterminate because R is varying for 0, 0. Okay, now the next is your 1, 1. Okay, 1, 1 happens when 1, 1. Okay, so you see this is 1, 1. 1, 1 happens for 0, 0. 1, 1 happens for when S is 0, R is 0. Okay, then you have 1, 1, and then you have 1, 1, 1, 1. S is equal to 1, R is equal to 0. S is equal to 1 and R is equal to 0. So for this parameter also you can have 1, 1. Okay, that means now your R is fixed and S is varying. Okay, so you write your R0 for this, but for this particular condition R0 and X is varying. Okay, so you put one line here. So this is your one term. Now similarly you can fill for other entries also. Okay, other entries. Now next state, what you want? Next state you want 0, 0. 0, 0 already be written, 0x. Okay, now you want 1, 0. 1, 0 happens once. You have 1, 0. It happens 1, 0. So this happens for S0 R1. S0 R1. Okay, 1, 0, and then nothing. Okay, S0 R1. You want 1, 0. So 1, 0 happens only for S0 R1. Okay, so you can put S0 R1. Are you getting what I'm doing? ये समझ में आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ? बताओ पहले. Yes. Yes, sir. Okay. Now the next is here again 0, 1.
Now 0 1 happens for what? 0 1 0 1 here, here 0 1 0 1 happens only for set state ना. 0 to 1 कब आएगा? Set state में. 0 to 1 कब आएगा? ऐसा फ्लिप फ्लॉप है. Only set state में, और किसी स्टेट में आएगा ही ना. भी सेट स्टेट में क्या, ऐसा फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है? सेट स्टेट, रीसेट स्टेट, टॉगल स्टेट तो है नहीं. तो अगर 0 से 1 आ रहा है तो इसका मतलब ओनली एक ही कंडीशन है, सेट कंडीशन है. सेट कंडीशन यूजुअली क्या है? योर एस इज 1 एंड दिस 0. भी ये क्या है आपका? 0 0. तो 0 0 कब आता है? 0 0 नो चेंज कंडीशन में आता है. 0 0 कब आता है? हाँ, ये जो आपने स्टार्टिंग में जैसे Qn प्लस 1 0 0 है, तो ये SR की वैल्यू तो 0 0 होगी ना, तो वही आपने वही X तो मैं लिखा वही तो हुआ मैं वही तो मैं बता रहा हूँ ना. भी 0 to 0 कब आता है? 0 to 0 comes only first for reset condition और no change condition. 0 से 0 इसका मतलब क्या है? No change condition है. S। और no change condition क्या होती है? No change condition होती है 0 0 S 0 हाँ R 0. जी, करेक्ट. हाँ जी, और 0 0 reset condition भी तो है. हाँ जी, तो reset condition क्या होती है? 0 1 होती है. यस सर. बट सर ये X की तो R वेरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? भाई ये जो हाँ सिचुएशन है, जी, R वेरी कर रहा है ना इसमें. If it is 0 0 0 0 comes for S 0 R 0, no change condition, and 0 0 also comes for 0 1. Okay, 0 1 will make 0 to 0, 1 also 0. So this also comes for 0 1 also. So S is fixed, but R is varying. So which variable is varying? I am putting X because this is indeterminate. Okay, similarly I am doing for other entries. Okay, now just look at this one. Now you have this 1 1. So 1 1 happens only for what? Only for set condition in SR flip flop. So this is the set condition 1 0 0 1. टॉगल तो होता ही नहीं है. 0 1 is only reset condition. Reset condition is 0 0 1. Okay, 0 1 already written here. I need 1 0 1 0 is your set condition, reset condition, correct. Okay, 0 1 is your set condition, your set condition. 1 1 is also your set condition. Okay, 0 1 0 1 is again your set condition. 1 1 is set. So 1 1 1 1 से कब आता है? नो चेंज कंडीशन. नो चेंज 1 1 कब आता है? S 0 R 0. Okay, and 1 1 का आता है जब S equal to 1 R equals to 0. So your S is varying. Okay, so 1 1 1 to 1 your S is varying, but your R is 0. Okay, now 0 to 1 is just 0 to 1 कब आता है? बताओ 0 to 1 का. हाँ, 1 0 हो जाएगा सेट 1 0 हो कंडीशन. जाए. और ये 1 0 कब आएगा? रीसेट कंडीशन में 0 1. 0 1 वैल्यू. ऐसे तो भरना है, बस सिंपल ही है. ओके, अब आपके पास में ये टेबल आ गया है. ओके, और just let me verify this table और फिर इसको सॉल्व करते हैं हम लोग. ओके, so you have basically S 0 0 X 0 0 1 X 1 0. very good. And then you X 0 X 1 0 0 0 0 1. ठीक है, टेबल इज करेक्ट. ओके, अब किसी को समझ नहीं आया तो बताओ कि टेबल कैसे लिखना है. आई कैन रिपीट once more. Shall I repeat once more? किसी को पूछना है क्या दोबारा? दीपक, पूजा, नंदना, राधिका, लक्ष्मी. If it is not clear, I repeat again. सर ये लास्ट सेकंड. Okay, कौन सा मैं शुरू से रिपीट करूं? फिर 0 0 0 0 comes when there is a no change condition, and 0 0 comes for reset condition. 0 0 comes for, I am writing here R. 0 0 comes for no change condition. 0 0 comes for reset condition. R is varying. 0 is fixed. I am putting 0 here. R is varying. Okay, the next state is your 1 1. Okay, 1 to 1 comes for no change condition, that is S0 R0. 1 to 1 also come for set condition S1 R0. R fixed, S varying. Okay, then R0, but what is varying? S is varying, R is 0. Okay, the next is what? 0 0, again same like 0x. Then you have 1 0. 1 0 only happens for toggle, or it happens for reset condition. Okay, toggle is not there in SR, so this is a reset condition, that is S0 R1. So 0 1. Okay, so this is 0 1. Okay, similarly this is set condition 1 0 1 1.
Okay, 1 1 1 to 1 1 to 1 is no change condition, that is S0 R0, and 1 to 1 also come in set condition. 1 to 1 is also set condition. Set condition is S1 R0. So the R0 S is varying. Okay, so where is 1 to 1? This one S is varying, R is 0, correct. Okay, now next is 0 1 0 to 1. So 0 to 1 only happens for what? Set condition. 0 to 1 happens from the set condition and toggle condition. Toggle is not there in SR flip flop. So only 0 1 is a set condition. So set condition means 0 1. ये क्या 0 1 में क्या होगा? Sotan 0 1 में this set condition 1 0. ठीक है. Now last is your 1 0. So this set condition 0 1. This is your 0 to 1 set condition. 1 to 0 is reset condition. Reset condition is 0 1. Okay. Now you have the table. Now please simplify this table and give me the answer for S. Okay, solve for separately for S, for R. Okay, your variables are what? J, K, Q, N. Your variables are J, K, Q, N. You have J, K, Q, N. Okay, your variables are J, K, Q, N. You have here, this is 0 1 J bar. Okay, 0 0 0 1 1 1 1 0. Similarly here 0 0 0 1 1 1 1 0. You have 0 1. Okay, now first fill the table for S. Okay, so S, for S we have a variable, so 0 0 0 is 0, so put 0 here. हाँ, दो टेबल क्यों बनाए सर? एक S के लिए, अब S ये S की बना रहा हूँ, फिर R की फिल कर रहा हूँ ना, दो वेरिएबल है ना. ओके सर. R का फंक्शन चाहिए, S का फंक्शन, S इज फंक्शन R इज आल्सो फंक्शन ऑफ JK चाहिए मेरे को ना. ठीक है, so now you have a 0 here, now 1 0 0 1 S is X bar. Okay, then 2 में क्या है? 2 में S क्या है? 0 है. 2 में S 0 है. Okay, 3 में S क्या है? 0 है. 4 में S क्या है? 1 है. 5th में S क्या है? X है. 6th में S क्या है? 1 है. 7th में S क्या है? 0 है. This is one table. Okay, similarly for you can put for R now. R initially you have for 0 your X, for 1 you have a 0, for 2 you have a don't get condition, and for here for 3 you have 1, for 4 you have a 0, 5 you have a 0, 6th you have a 0, 7th you have a 1. Okay, now solve this table and tell me the value of S and R. सर पहले वाले के लिए J K bar plus J Q आएगा. Okay, so the answer you to tell me. So first S is saying, Sutton is saying S I am is Kishore, not Sutton. huh? Sir, I am Kishore, Kishore. not Okay, Sutton. Kishore, S क्या है? Sir, J K bar plus J Q. J K bar Q N bar, J Q N bar S. Okay, and what is R? So you want S first, S. Okay, so S should be in, and R is KQN. R is KQN. ये आ रहा है क्या आंसर? बताओ मुझे. यस सर. Yes, sir. Okay, तो बस अब तो काम हो गया तुम लोगों का सबका. ठीक है, if you have to make this, we have to solve this one. Okay, so we have to make pairs. So pair, how can you make? I can only make pair like this. Okay, so if this may make it, this become J, this become J and 0 0 common QN bar. So S is QN bar, correct. Okay, second सर I can इसमें X को नहीं लेंगे डोंट केयर कंडीशन में, तो वो इसका ग्रुप बन जाएगा. नहीं, जब फालतू में नहीं बनाना ना. अगर 1 को कवर कर रहा है तो बनाना, अदरवाइज नहीं बनाना है. ये अगर हमको 1 को हेल्प कर रहा है पेयर बनाने में तो करना है. अभी हेल्प कर नहीं रहा है अभी तो. ठीक है, Okay. it's not helping here. Okay, and now here you have only this pair, so you can make one pair, so that become what?
This is KQN. This is KQN. So you got a variable. So you got a relation now. Okay. Now it is very easy. Now you have to convert SR flip flop to JK flip flop. That means you have to change the variables. Okay. So this conversion is very easy. So you have this one. You have SR flip flop. Okay. So you have Q bar. Okay. Now you have a, instead of SR, I am replacing by JK. Okay. So now what S is equal to JQN bar. Okay. S is QN bar. So you want this one. This is QN and this is QN bar. So you want this one. So you want this one. Okay. So now you have to put one AND gate here. AND gate. Okay. So you give J and you give QN bar. Multiplication will come here S. Okay. Instead of S, you will come KQN bar. This will be your J QN bar. Okay. Similarly for R. Okay. Of course, clock will be there somewhere. And R you want KQN. Okay. So you want again AND gate. You want to give K and you want to give QN. So QN will come from here. QN. Okay. So this is your KQN. Okay. Now this flip flop will act as like a JK flip flop. Okay. Now you can put all the values here. You can check whether it is working like a JK flip flop or not. Okay. So this is your SR2 JK flip flop. SR2 JK flip flop. Okay. Now your homework is actually now every method is same. You can do conversion any flip flop. You can do convert what I have done. Okay. Just for one, I'm giving one question. JK flip flop to SR flip flop. You have to do. Okay. JK flip flop to SR flip flop. This is your homework. Send me after class. Okay. And some is very easy. Some conversions are very easy. How? Like suppose I want to do SR flip flop to D flip flop. SR flip flop to D flip flop. Okay. So we already done. If you want to solve, you can solve again the same method. And we already know how to convert SR to D flip flop. So what we have done? We are having S Q bar. What I use instead of I use a variable D here and I use inversion of D here. Okay. So this was basically what? D bar. So and D. So you're basically saying S is equal to D and your R is equal to D bar. This is the conversion. This is direct conversion from SR flip flop to D flip flop. Similarly, we have seen JK flip flop. JK. Okay. Q. If I want to make JK to T flip flop, JK to T flip flop. Okay, we already know JK is made for T is made for JK. That is J equal to T, K equals to T. So this is your T flip flop out of JK. This is your D flip flop out of SR. These two already we have seen, but if you want to solve and calculate find its relation, the method just now I told you apply the method. You get these relations. Okay. So these all three you try and send me as a homework. The method what I told you right now. Okay. Just you need to write the excitation table. जिसको convert करना है उसको पहले लिख दो. और वो state के लिए इसमें क्या होता है वो variable you have to put. Okay. And you have to solve. And you do the circuit. So I'm stopping here. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Okay. सर ये सब सर्किट में क्लॉक तो रहेगा है ना? क्लॉक तो रहेगा, सब में क्लॉक तो रहेगा. ओके सर.
थैंक यू सर। थैंक यू। सर एक डाउट है हाँ बोलिए। सर, जब के ग्राफ बनाते हैं आप के मैप पे, उसमें सर जो डोंट केयर कंडीशन है उसको भी लेते हैं सर? उसको तब लेते हैं वो अगर हमको पेयरिंग में हेल्प कर रहा है, बनाने में, पेयर को छोटा करने में हेल्प कर रहा है, ओके, या पेयर बनाने में हेल्प कर रहा है, या किसी किसी या किसी कोई पेयर छोटा बना उसको बड़ा बनाने में हेल्प कर रहा है, वेरिएबल को कम करने में हेल्प कर रहा है, तो उसको लेना है, अदरवाइज नहीं लेना है। सर जैसे एसआर फ्लिप फ्लॉप में लिया था सर, उसमें हम्म कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखने के लिए सर, हाँ उसमें हाँ सर डोंट केयर हाँ कंडीशन उसमें तो उसमें तो ऐसा था ना, कुछ कुछ ऐसा था, 1 1 x था ना, ऐसा कुछ था। यस सर, ठीक ऊपर है। भी 1 0 हाँ 1 0 था सर। यहाँ पे क्या था, 0, यहाँ पे क्या था 1 1 1, और यहाँ पे क्या था 0 0। 0 0, हाँ ये था ना। यस सर। तो अभी अभी हमको पेयर बनाना है, ठीक है, तो सर इसका पेयर बनाना है, इसका पेयर तो ये बन गया, यस सर। ठीक है। अब इसका पेयर बनाना है, तो पेयर तो बन रहा है हमारा यस इससे, सर। ठीक है। तो अब लेकिन लेकिन ये अभी बड़ा पेयर बन रहा है, तो बड़ा पेयर बना दो। बड़ा पेयर बनने से क्या होगा कि आपका क्या हो जाएगा, आपका ये वेरिएबल्स आपके कम हो जाएंगे, ओके। उसमें सर आर बार क्यू एन प्लस एस आर बार आता है। ये क्या था आपका, ये किसकी थी, एस आर क्यू एन। क्यू एन था, ठीक है। और ये किसके लिए सॉल्व कर रहे थे हम लोग, क्यू एन प्लस वन के लिए ना, यस सर। क्यू एन प्लस वन के लिए। तो अब ये क्या आएगा आपका 0 0, ओके, दिस इज 0 1 1 1 1 0, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस एस बार, दिस इज एस, ओके। तो अब इसके लिए क्या आएगा आपका, ये टर्म लेंगे, तो ये एक तो ये हो गया टर्म, या तो एस तो वेरी कर रहा है, ओनली दिस फिक्स्ड, ओके। सो ये क्या आ जाएगा आपका आर बार क्यू एन, ठीक है। यस और सर। अब ये चारों टर्म लेंगे, ओके। तो यहाँ पे क्या, एक तो एस फिक्स्ड है, ओके। यस और क्या फिक्स्ड है, अच्छा इसमें ऐसा हुआ था, और क्या आएगा इसमें, इसमें सर और यदि कोई नहीं। तो लिखते हैं तो फिर 1 1 में आर एस आर बार आ जाएगा। एस आर बार, यस सर। ऐसे शुरू कैसे, वाले दो लिखते हैं सर। शुरुआत दो ही लेंगे, हाँ इसमें शुरुआत दो ही लेंगे ना, इसमें शुरुआत दो ही लेंगे ना, इसमें क्यों लेंगे भी, इसमें आपका वेरिएबल कम नहीं हो रहा है ना, यस सर। तो एस एक्स फिक्स हो जाएगा यहाँ पे, ओके। और क्या वेरी कर रहा है, ये वेरी कर रहा है आर चारों बार। क्यू एन बार आ रहा है, अगर हम ए वाले 1 और उसका पेयर ले तो सर एस क्यू एन बार आता है ना सर, फर्स्ट 1 एंड लास्ट दैट, अगर पूरा ले लेते तो ऐसे ही आता ना, तो पूरे में तो फिर 1 1 भी तो आ रहा है ना 1 1 क्या आएगा, सर, क्यू एन बार कैसे आएगा सर, तो नहीं बीच में अभी इसमें क्या आ रहा है, अभी इसमें क्या आ रहा है, इसमें के आपका हिसाब एस से तो ऐसा आना चाहिए। एस आना चाहिए, और एस आना चाहिए, और क्या आना चाहिए, आर बार, ये क्या है, क्यू एन बार था सर, ऐसे अच्छा था जब हमने किया था। ऐसा था। यस सर। ये चेक करने दो टेबल मुझे एक बार, टेबल सही है कि नहीं, पहले चेक करने दो टेबल। सो एस आर फ्लिप फ्लॉप कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन फॉर, हाँ तो हमारे पास ये आंसर तो मेरे पास यही है, एस प्लस आर, आंसर तो मेरे पास ये है एस प्लस आर बार क्यू एन, ये आंसर है मेरे पास, ओके। सो ये 0 1 0 0 1 1 1 x, हाँ तो ठीक ही तो है, तो मैं सही तो कर रहा था भाई, आपका इसका आपका खाली ऐसे ही आएगा, ये सर सही है। इसका ऐसे ही आएगा, और इसका आपका क्या आएगा, ये वाला पहले एस की जगह क्यू एन लिखवाया था। एस की जगह, अच्छा वो सही कर देना उसको हाँ प्लीज, जी। उसको ठीक कर देना उसको। नहीं सर, क्यू एन इजिकल टू एस प्लस आर बार क्यू एन नहीं लिखाया था आपने, दिखाया था ना, वो चेक कर सही लो, लिखा था। देख लेना अपना, देख लेना, देख लेना, मैं कुछ हो सकता है मिस। हाँ एक था जेके, जेके में लिखवाया था के बार क्यू एन, जेके क्यू वन बार, जो भी है, अब देख लेना, सर यही लिखवाया था सर, चेक हम्म। किया। ठीक है चलो। हाँ डाउट किसको था, क्वेश्चन कौन पूछा था, मैं सर साहिल। क्या नाम है, साहिल सर। साहिल, तो अभी अभी क्लियर है, यस सर, ये पेयर बड़े से बड़ा लेना है सर जो भी। बड़े से बड़ा लेना है। ओके सर, थैंक यू सर।